Now what we have to do? We have to deconstruct this hierarchy. We have to deconstruct this proposition that nature is good and human society is bad. Now either we have to make both good or we have to make both bad. Now that would be the deconstruction approach. When we do that, in that case we will have scope for various interpretations. Otherwise we have got only one interpretation, that human society is bad, you cannot live in it, it's not worth living, you should find peace somewhere else, say for example in nature or in other things. But now when we will do the deconstructionist reading, या हम जब deconstruction apply करेंगे तो हम इसके मीनिंग को destabilize करेंगे. हम ये कोशिश करेंगे कि जो नेचर है वो उतना अच्छा नहीं है जितना कि हमको पहली रीडिंग में पड़ा, और ह्यूमन सोसाइटी इतनी भी बुरी नहीं है जितनी कि हमको पहली रीडिंग में लगा. और हम ये भी कोशिश करेंगे जस्टिफाई करने की कि मैथ्यू आर्नल्ड जो इस पोएम को लिखता है वो खुद भी डाउट में है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है. अब ये हम कैसे करेंगे? हम आते हैं स्टेप 2 में, जिसमें हम अब डीकंस्ट्रक्शन करेंगे, इन विच वी विल destabilize this binary opposition, this stabilized meaning which we thought at first was. And we will again look at the same words from different perspective. For example, let's come to the first verse when he says the sea is calm tonight. Now the sea is calm would have been a good argument, but the sea is calm tonight creates doubt. So what is the first doubt? पहला डाउट ये है कि मैथ्यू आर्नल्ड जब अपनी बीवी से कहता है कि the sea is calm tonight, तो एजर्शन ये है कि जो समुंदर काम है, जो उसमें कामनेस है, वो आज की रात है. So the other suggestion would be maybe some other night the sea won't be calm, which means that nature is not always innocent. It cannot be innocent always. So we understand that the nature can also be violent. So the general idea or the general proposition that nature is calm, is innocent is not the last reading of this poem. ये आखिरी मतलब नहीं है, या यहाँ पे हमको रुक नहीं जाना चाहिए. हमको टुनाइट पे ध्यान रखना है कि जब ये कहता है कि द सी इज काम टुनाइट, इसका मतलब आज की रात समुंदर काम है. मे बी पिछली रात काम नहीं था, मे बी पिछली रात इतना खामोश नहीं था, मे बी 2-3 रातों बाद ये इतना खामोश नहीं होगा, मे बी कभी ये वायलेंट हो जाएगा, which means that nature is not always calm. So we start deconstructing that binary division. जो अभी तक हमको लगता था कि नेचर अच्छा है, अब उस नेचर की अच्छाई 5% गिर गई, क्योंकि जो काम वर्ड यूज किया है मैथ्यू आर्नल्ड ने, उसको खुद भी डाउट है कि ये सी की जो कामनेस है ये सही है या गलत है. और जब हम आगे चलते हैं इस पोएम में, और एक और चीज हम नोट करते हैं, लैंग्वेज टून. टू द विंडो स्वीट इज the night dash air and then mark of exclamation. जब वो अपनी बीवी को कहता है come to the window, sweet is the night air. Between night and air he puts a dash. Now this dash also can create a doubt if you want to. अगर बंदे को डाउट क्रिएट करना है तो नाइट और एयर के बीच में जो डैश है ये सफिशिएंट है डाउट क्रिएट करने के लिए. अब नाइट और एयर के बीच में डैश हमको 2 प्रोपोजिशंस देता है. एक कि आज रात की जो एयर है वो स्वीट है, स्वीट इज द नाइट एयर, ठीक है. सो इट इज द नाइट, इट इज द एयर ऑफ टू नाइट विच इज स्वीट. दूसरी प्रोपोजिशन हमें, या दूसरा मतलब हम इसको समझ सकते हैं कि वो 2 चीजों के लिए रेफर दे रहा है. पहले वो कहता है कि स्वीट इज द नाइट, फिर एयर. सो ही हैज ए डाउट कि नाइट स्वीट है या एयर स्वीट है, ये उसको पता नहीं है. अब अगर हम इन दोनों प्रोपोजिशंस को लेते हैं तो भी हमारा मीनिंग बदल जाता है. से फॉर एग्जांपल अगर हम ये समझते हैं कि सेकंड जो प्रोपोजिशन हमारी है वो ठीक है, कि इसका मतलब ये है कि मैथ्यू आर्नल्ड को डाउट है कि स्वीट क्या है, नाइट स्वीट है या एयर स्वीट है. अगर उसको इन दोनों में डाउट है तो इसका मतलब उसको नेचर पे इतना भरोसा नहीं है कि जिसकी बिना पे हम एक टोटल डिवीजन बना दें कि नेचर इज गुड एंड सोसाइटी इज बैड. अगर उसको ये डाउट है तो वी कैन नॉट डेवलप दिस बाइनरी डिवीजन. तो अगर पहली वाली प्रोपोजिशन सही है कि नाइट स्वीट इज द नाइट एयर, कि ये जो रात है, इस रात की जो एयर है वो स्वीट है, तो फिर हमारा मतलब ये होगा कि किसी और नाइट की एयर जो है वो स्वीट नहीं है, या फिर दिन की एयर स्वीट नहीं है.
दोनों चीजें हो सकती है ना, कि अगर नाइट एयर स्वीट है इसका मतलब डे टाइम में जो हवा चलती है वो स्वीट नहीं है। तो अगेन जो नेचर है वो एज ए होल ठीक नहीं है, एज ए होल गुड नहीं है। तो ये प्रोपोजिशन बना देना कि नेचर इज गुड और ह्यूमन सोसाइटी इज बैड, ये अगेन जो है अब यहां पे डीस्टेबलाइज हो रहा है। तो डीकंस्ट्रक्शन क्या करता है, वो डाउट क्रिएट कर रहा है और हम डाउट क्रिएट किए जा रहे हैं डोवर बीच की इंटरप्रिटेशन में, और उससे हमको नई इंटरप्रिटेशंस बहुत जल्दी सामने आएंगी। जब हम मजीद पढ़ते हैं इस पोएम को तो मैथ्यू आर्नल्ड जो है, ही टेल्स हिज वाइफ लिसन टू द ग्रेटिंग रोर ऑफ पेबल्स। अब वो पेबल्स की जो साउंड है, वो कहता है कि जो वेव्स आती हैं वो पेबल्स को हिलाती हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं, फिर वो पेबल्स जो आपस में टकराते हैं और वो एक साउंड क्रिएट करते हैं। अब जो वो साउंड क्रिएट करते हैं उसके लिए जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है मैथ्यू आर्नल्ड की वो नेगेटिव है। वो ग्रेटिंग रोर यूज करता है। ग्रेटिंग क्या होता है, ग्रेटिंग के मानी होते हैं एनॉइंग। तो वो जो नेचर से आने वाली साउंड है उसको मैथ्यू आर्नल्ड एनॉइंग कहता है। Which means कि नेचर का अगर एक established हम मान के चलें कि नेचर इज ऑलवेज समथिंग दैट गिव्स solace, serenity, peace, it's not true. It can also produce grating roar. और फिर इस stanza को एंड करता है कि जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं पेबल्स, they bring in notes of eternal sadness. Which means कि अगर हम ये मान के चलें कि नेचर इज गुड और ह्यूमन सोसाइटी इज बैड, सो दैट इंटरप्रिटेशन इज नॉट फाइनल। थर्ड, सेकेंडली, नाउ इफ वी लुक एट द अदर साइड ऑफ दिस पोएम, दैट इज ह्यूमन सोसाइटी। नाउ देयर आर टू थिंग्स अगेन इन दिस सोसाइटी दैट मैथ्यू आर्नल्ड लुक्स एट। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ही लुक्स एट फेथ in third stanza of this poem. When he talks about faith, he laments the loss of faith. Now, lamenting the loss of faith would be something that he wants the restoration of faith, because he laments in such a manner that he thinks that when there was faith, world was good. जब दुनिया में फेथ था, जब लोगों को रिलीजन पे फेथ था या जब लोग फेथफुल थे तो दुनिया अच्छी थी। लेकिन अब जो है I hear only retreating sound of it, a retreating roar. अब ये जो है, ये जो रिलीजन है ये खत्म हो गया, and we are left with the naked shingles of the world. हमारे सामने जो दुनिया है वो एक नंगी होके रह गई है, बुरी दुनिया है। लेकिन फेथ जब था तो ये अच्छी थी। अब ये जो आइडिया है यहां भी मैथ्यू आर्नल्ड क्लियर नहीं है, उसको यहां डाउट है। क्यों डाउट है? वो डाउट इसलिए है कि अगर फेथ अच्छा था या फेथ के टाइम पे दुनिया अच्छी थी तो इंप्लाइड ये है, समझने वाली बात ये कि डोवर बीच में फिर मैथ्यू आर्नल्ड एडवोकेट करता फेथ के लिए, लेकिन वो लास्ट स्टैंजा में फेथ के लिए एडवोकेट नहीं करता है। ही डजंट से आह लव लेट्स बी फेथफुल, लेट्स गो बैक टू फेथ, वो ये नहीं कहता है। वो क्या कहता है? आह लव लेट्स बी ट्रू टू वन अनदर। वो एक तीसरी चीज की तरफ जाता है। He goes to a third thing, to a third solution. He does not go back to faith. From where we understand that there is ambiguity also in the mind of Arnold. Arnold is not also sure about what he wants to say. He is not clear whether the world, when it was full of faith, was good or bad. Because if it was good, so he could have asked for restoration of those periods, but he doesn't. He says that if faith has vanished from the earth, let it be. Let's look for something else and find solace in somewhere else. So what we find here after the deconstructionist reading of this poem, that the binary division is over. What we have done, we have brought nature and human society almost in parallel, and in both these things we find negatives and positives. For example, if nature is peaceful, is calm, it can be violent also. If it gives serenity, it can produce grating roar also. So nature में अच्छाई भी है और बुराई भी है, and similarly जो society है उसमें भी दोनों चीजें हैं। If it is full of miseries, full of troubles, with no joy, with no peace, with no certitude, but if we be true to one another, we can overcome those things also. We can come out of that confused state where we struggle, where we fight. So
what we find is that a deconstructionist reading of this poem would leave reader with 4 options, or with 4 choices, or with 4 meanings in this poem. One is, you can find peace with nature by standing on window. Take as it says, come to the window, sweet is the night here. So that could be one thing where one finds peace, one finds serenity. One can feel sadness by listening to the grating roar created by the pebbles. That is the second thing that we can get from this, second choice, second option. Third is that we can reduce the troubles by being true to one another, or we can remain confused by not being truthful to one another. So, in spite of talking in a structuralist manner of dividing this poem between good nature and bad human society, what we end up with a deconstructionist reading is a more broader meaning of this poem, wherein we understand that we need to find ways and means of being at peace, or finding serenity and solace by clubbing both nature and human society together. Because if human society can be violent, nature can also be violent. If human society can give you a moment of peace, nature can also give you a moment of peace. Now that was the deconstructionist reading of Dover Beach, or application of deconstruction on Dover Beach. Now what we did basically in this poem was we first created a binary division and then deconstructed that binary division. The binary division was created by taking evidences from the poem in support of that argument, and when we deconstructed that binary division, we also took evidences from within the poem. I hope that this lecture was helpful for you and you were able to understand the application of deconstruction, and you can apply this deconstruction on other poems by following a similar kind of a pattern or similar kind of a method. Thank you for watching, and keep watching UrAkedmi for more interesting stuff. Don't forget to like, share, subscribe and comment on UrAkedmi.